हाय फ्रेंड्स मो रजत वेलकम टू स्टडी आईक्यू ओपीएससी पिला माने आपण स्क्रीन माध्यम देखि पाउथिबे गोटे वन शॉट वीडियो रहिछि आपनकर ओडिसा र सब परीक्षा पई बेसिकली एएसओ पीईओ पुलिस एसआई पई एठी म आपनको इंडियन पॉलिटी आनिछि टोटल ए टू जेड कांसेप्ट रो एमसीक्यू सिलेक्टिव एमसीक्यू आपण देखिबे ए टू जेड जहाँ भी विषय रही से सब उपरु क्वेश्चन विथ आपनकर सॉल्यूशन मध्य रही बुझिला। तो बर्तमान में जीवा डिस्कशन करिबा जो माने चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन क्लिक करा पई आपण भूलंतु नहीं कहीं ना नेक्स्ट अपडेट आपण मन पाखरे बहुत जल्दी पहुंचीबो। ठीक अछि वर्तमान हमें जीवा फास्ट क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करिबा। एठी प्रथम क्वेश्चन अछि पिला माने समस्त को विजिबल होउची। ओके फर्स्ट क्वेश्चन एठी अछि व्हिच ऑफ द मन रखिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट अबित्र को पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर्स टू एज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा को हमें एठी कंसाइंस बोली कहिबा को पार्ट को हमें एठी कंसाइंस बोली कहिबा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कहा को हम पिला माने कंसाइंस बोली कहिबा ना कंसाइंस कहिबा फंडामेंटल राइट्स की कहिबा एवं डीपीएसपी की कहिबा बुझिला। फंडामेंटल राइट्स एवं डीपीएस की हमें कहिबा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन पई कहिबा ता रीजन होची पिला माने कहना कोर सिग्निफिकेंस होची बहुत इंपोर्टेंट रही राइट्स गारंटी एसेंशियल फ्रीडम डीपीएसपी हमको दउची गाइड करूची स्टेट को ये हमको फ्रीडम दउची टुवर्ड्स ए सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ए जो ग्रांड भाई ऑस्टिन कहिथिले गोटे एमिनेंस हिस्टोरियन थिले से कहिथिले टुगेदर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहिथिले मध्य ता आपनको परीक्षा रे मध्य एठी क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट को देइची पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिवो एवं आर प्रोसीजर को भी अमेंड करिवो को आर्टिकल ता माने सिंपल तुमे कहिवो को आर्टिकल पार्लियामेंट को देइची पावर से संविधान रो प्रोविजन को चेंज करि पारिवो अमेंड करि पारिवो आर्टिकल मन रखो 368 आर्टिकल 368 हबो राइट आंसर बुझिला पिला माने 368 हबो आपनकर राइट आंसर। एठी हमरो गोटे केस मध्य आस्तिला केशवंत भारती केस 1973 जो केस रे सुप्रीम कोर्ट राय देइथिला पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर को इंपार्ट न पकई आपण जे कोनसी पार्ट को चेंज करि पारिबे एटा अमेंडमेंट पिला माने हमरो जो पार्लियामेंट करे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपे स्पेशल मेजॉरिटी मध्य दरकार इन बोथ हाउसेस एटा भी आपण माने मने रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज वोटिंग एज ऑफ इंडिया रिड्यूस फ्रॉम 21 रु 18 वर्ष वोटिंग एज कमिला 21 रु 18 वर्ष पिला माने हम जानिछे 21 वर्ष आगु थिला एबे ता चेंज हेइ कि आपन को 18 वर्ष करा वाला एटा कोटा हे जिवो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 रे वोटिंग एज 21 वर्ष रु कम करा जाय कि 18 वर्ष करा गला पिला माने बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिवो आपन को एसओ एग्जाम हो पीओ एग्जाम हो कि आपन को एसआई एग्जाम हो एवं टिके आर्टिकल मॉडिफाई करछि अमेंड आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन which govern election लोकसभा and state legislative assemblies democratic expansion amendment aimed at increase youth participation करी बोलीटा सेट भाई मध्य रहिला ए जो चेंजेस करा गला which writs issued to the court to inquire into legality of a claim a person to a public office गोटे लोक पब्लिक ऑफिस रे लीगली वे रे अछि कि नाही ताकू क्लेम करा जिवो यदि कोनसी फ्रॉडुलेंस मींस आपण एठी ऑफिस रे जॉब करसंती ताले कोर्ट ताकू आपन को कोर्ट ऑर्डर देबो जे प्रूव करिया पई लीगलिटी तारा को रिट्स
which reads issued by Supreme Court under Article 32, High Court 226 तो आम कही ता अर्थ कौन पिला माने मन रखियो कुआरंटो ए कुआरंटो अर्थ होची पिला मन मन रखियो कुआरंटो हला अर्थ होची लीगैलिटी आपन को क्लेम करा जे आपन सत्य लीगल वे रे ऑफिस रे अछंती कि नाही कुआरंटो मीनिंग होची यानी बाय व्हाट अथॉरिटीज और वारंट एटा मन रखियो ए टर्म मन रखियो क्वेश्चन आपन आसीबे इलीगल पिला माने पब्लिक ऑफिस बाय पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड टू आपन को पाखरे से क्वालिफिकेशन नाही फिर भी से ऑफिस रे अछंती लीगलिटी क्लेम करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जीवा हु अमंग फॉलोइंग एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा एटा भलो जानि छे राज्यसभा रा चेयरमैन बाय डिफॉल्ट काहू करा जाय जी हेबे पिला मन रख प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर प्राइम मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट जी हेबे वाइस प्रेसिडेंट मन रखिबो जी हेबे वाइस प्रेसिडेंट सी ही हेबे राज्यसभा रा चेयरमैन बुझिला हमें जानि छे आर्टिकल 64 एबो 89 आर्टिकल 64 89 स्टेट दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ बा राज्यसभा रा कहि परिबे हला कास्टिंग वोट अंक मध्य जी आज चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट मन रखियो डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस के वोट दिन जदि आवश्यक पड़ला कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई एटा मन रखियो कास्टिंग वोट दे परिबो इन केस ऑफ टाई जे टाई ला कोनोसी तले ये वोट मध्य देबे जहा को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट व्हिच लैंडमार्क केस को लैंडमार्क केस रे सुप्रीम कोर्ट गोटे कॉन्सेप्ट देला जे बेसिक स्ट्रक्चर देला एवं कहिला पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन फंडामेंटल राइट्स आल्सो सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर को इंपैक्ट न पकाई आपण किछि भी चेंजेस करि परिबे से केस ना होची केशवानंद भारती केस 1973 कोनेला केशवानंद भारती केस 1973 रे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पिला माने स्टार्ट हला इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए 13 जज बेंच ए जो केस हेतला 1973 रे हेतला हला that parliament amending power under article 368 cannot alter or destroy the basic structure next question jiwa pila mane which schedule of the Indian constitution deal with allocation of seat in Rajya Sabha to the state and union territories को schedule mention अछि जे allocation of seat Rajya Sabha to the state ru यूट्यूब केमिति आसीबे को उपाय रे आसीबे को माध्यम रे आसीबे को शेड्यूल मेंशन अछि मन रखियो फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ allocation of seat to राज्य सभा from state and UT सीट केमिति allocate होई थाए सीट allocation based on मन रखियो population of each state meaning larger state get higher representative जार small से small पर पाइबो थर्ड शेड्यूल जाउची ओथ अफर्मेशंस 7 जाउची आपनकर फेडरल स्ट्रक्चर 8 जाउची आपनकर ऑफिशियल लैंग्वेज जो तीनटा शेड्यूल अछि ता विषय मध्ये म आपनको कहि देली बुझिला अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स को ग्राउंड रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हेइ थाए को तीनोटी ग्राउंड बा दुईटी ग्राउंड बा गोटिए ग्राउंड कहि परिबे जो द्वारा आमे नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेयर करि थाउ मन रखिबो वार हेला एक्सटर्नल एग्रेशन हेला आर्म रिबेलियन ए जो वार अछि आर्म रिबेलियन एटा माने प्रीवियस थिला पूर्वरु थिला कोन जानछ पिला माने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पछरे चेंज करा जाई याकू आर्म रिबेलियन करा गला ए तीनोटी केस रे आमे हम देश रे प्रेसिडेंट कोन करि परिबे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबे बाय रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मन इच्छा न बुझिला ए जो टर्म थिला आपन कहली आर्म रिबेलियन या आगु थिला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 याकू चेंज कला इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कला कोन आर्म रिबेलियन कला बुझिला भले से मन रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत तमे एठी डीपीएसपी विषय रे कहूची पिला माने डीपीएसपी विषय रे कहूची जे कोन कहूची
विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करिया पई आर्टिकल कोटा जोटा कि गांधीयन प्रिंसिपल जाउची डीपीएसपी जो तीनोटी प्रिंसिपल अछि गांधीयन लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड सोशलिस्टिक एई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत गोटे गांधीयन प्रिंसिपल रो पार्ट एवं आर्टिकल 40 रे जाउची आपनरो मन रखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एवं आपण जानथिबे 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे मध्य एठी पंचायत राज ऊपर मध्य डिस्कशन करा जायथिला कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशियल रिव्यू कोठु हमें बर करी आनिचे यूके यूएसए कनाडा आइलैंड ए जो कांसेप्ट होची जुडिशियल रिव्यू एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जहां भी लॉ बनेबे दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इन सर्टेन केसेस किसी एग्जेम्पशन मध्य थाए जुडिशियल रिव्यू माने से चेक कर जुडिशियल डिपार्टमेंट चेक करिवो दी वैलिडिटीज जो लॉ पास होईची जो लॉ तैयार होईची ता संविधानिक प्रिंसिपल को बेस करी होईची कि नहीं एवं ए कांसेप्ट हमें कोड बर करी आनलु यूएसए मनैला यूएसए रे बर करी आनलु हमरो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवं सुप्रीम कोर्ट इंडिया हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू मध्य बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट आपण कहि परिबे हला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा आपण गोटे दिनस पिला माने कहूची मन रख जो माने स्पेशली पिला माने ओपीएससी एएसओ पय प्रिपरेशन करूचो आपण पय बहुत भलो कांसेप्ट कहूच देख जदी आपण टोटल घर बसी ऑनलाइन क्लास करिवे विद इन 6 मंथ टाइम भीतर टोटल कोर्स कंप्लीट होउची एवं ए बैच आपण केमिति जॉइन करिवे जदी आपण स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन अछि प्ले स्टोर जानतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल करी लॉगिन करंतु कोला परे आपण स्टेट पीसीएस रे ओडिशा स्टेट पीसीएस चेक करिवे तापर एठी देखिबे ऊपर सर्च बटन गोटे आसीबो सेठी आपण केवल एएसओ लिखिबे लिखला पर आपण को फाउंडेशन बैच 4 आपण शो करिवो जो बैच कोर्स ना होची ओपीएससी एएसओ फाउंडेशन बैच 4 विद्या मनैला विद्या होची बैच कोर्स ना ए बैच 13 जुलाई रु स्टार्ट हेची पिला माने एठी आपण को डिस्काउंट कटिकरी 2811 लिखिची आपण बाय नाउ ऊपर क्लिक करिवे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाया पई आपण को मागिवो गोटे कूपन कोड देखंतु स्क्रीन ऊपर जो कूपन कोड मेंशन अछि RRLIV ताकू आपण लिखिवे RRLIVE मनैला RRLIVE आकू लेखि के जदी अप्लाई मारसुंती ना देखंतु एठी आपण को मात्र 2499 आसीबो एठी आपण को जो रहिची देखंतु बेनिफिट आपण निजे देखि परिबे ये सबू देखंतु बेनिफिट रहिची आपण को एठी टोटल आपनकर 450 घंटा क्लास रहउची लेक्चर नोट्स रहउची प्रैक्टिस क्वेश्चन रहउची सबटु बड़ दिनस होची आपन को टेस्ट सीरीज मध्ये ए बैच रे ऐड अछि एवं पीवाईक्यू एनालिसिस मध्ये रहिची बुझिला जॉइनिंग करिया पई केवल कूपन कोड मन रखिबे जो कूपन कोड लिखा है स्क्रीन ऊपर RRLIVE ए कोड आपन पुट कले डिस्काउंट होई जिवो आपन जॉइन करी क्लास करि परिबे सब कांसेप्ट बेस क्लास रहउची ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो जाए जो माने चाहूचे जॉइन करि पारिबो ठीक अछि एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने हमें जिबा डिस्कशन करिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अछि थी आपन को अंडर व्हिच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया promulgate ordinance when parliament not in session जेतो पार्लियामेंट रे सेशन होई नथिबो सेतबे प्रेसिडेंट तांको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की यूज करी करी कोन करि पारिबे पिला माने ऑर्डिनेंस पास करि पारिबे एबो एटा को आर्टिकल मेंशन अछि आर्टिकल 110 123 213 249 मन रखिबो एठी आर्टिकल 123 रे मेंशन अछि जेतले पार्लियामेंट रे सेशन होई नथिबो प्रेसिडेंट तांको हमर रूलिंग पार्टी आसिकरी एडवाइस करियो जे सर प्लीज बतन तो सेशन होई नै पार्लियामेंट रे आपण आपण को पावर को यूज करी ऑर्डिनेंस इशू करि पारिबो जोटा कि ओरिजिनल पार्लियामेंट द्वारा जहाँ भी होबो सेही परि मध्य काम करिवो रेगुलेशन द्वारा मध्य काम करिवो एवं ए ऑर्डिनेंस पिला माने जेतले नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन आड हे जिवो आरो मध्य एक्सपायर मध्य होई जिवो देख से कुछ ऑर्डिनेंस कैरीज एग्जैक्ट सेम फोर्स effect at the parliament every ordinance must be laid before parliament upon a reassemble and ceases to operate after 6 week is not approved 6 week पर आपन को ऑटोमेटिकली कैंसिल जे अप्रूव न होबो कैंसिल होई जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन पचरे जेठी कोन व्हिच अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
incorporate the fundamental duties. Article 51A रे अछि ए जो को अमेंडमेंट एक्ट से कहूँ फंडामेंटल ड्यूटी की आड कला गोटे नुआ पार्ट आड कला नुआ आर्टिकल आड कला आपण जानिछंती 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जाको आमे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहि थाउ काइना बहुत गुडे कांसेप्ट एठु आसी एवं आगुरु 10 ड्यूटी थिला 10 बा 10 नंबर ड्यूटी थिला लाटर 11 ड्यूटी आडला केबे ना हमर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसिया रे एटा पर आड हैला 11th ड्यूटी टोटल बतन केतरा ड्यूटी ना 11th ड्यूटी मोट ऊपर अछि 11 ड्यूटी एटा अछि पिला माने सोरन सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे एटा हेइतला एटा मन रखियो को कमिटी रिकमेंडेशन करथिला ना सोरन सिंह कमिटी रिकमेंडेशन करथिला फंडामेंटल ड्यूटीज बुझिला चलो who among following has authority to remove a judge of the Supreme Court of India from office कहा पाखे पावर अच्छी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे जो जज मान को रिमूव करी पारिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग अलोन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एड्रेस बाय पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर विथ कंसेंट ऑफ कैबिनेट ए कोलिजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज मन रख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एड्रेस बाय पार्लियामेंट पार्लियामेंट रेजुलेशन पास हला परे ता प्रेसिडेंट तांको काढिबे तांको रेजुलेशन मध्ये पास हबो उठी टू थर्ड मेजॉरिटी पार्लियामेंट सपोर्ट करिवे तापर तांको कोढा जी मन रहिला चलो which list under 7th schedule of Indian Constitution contains subject on which both parliament and state legislature can make law को सब्जेक्ट ऊपर को जो को सब्जेक्ट ऊपर बोथ यूनियन एवं स्टेट लॉ तैयारी करि पारिबे सेटा हम जानि छे कॉन्करेंट लिस्ट अछि जो लिस्ट उभय स्टेट एवं सेंटर मिसिकरी ताको बुझंती जोटा कि हम कहि परा कॉन्करेंट लिस्ट कहि परिबा हला पार्लियामेंट एवं स्टेट मिसिकरी लॉ बनि पारिबे हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन कहिला व्हिच आर्टिकल गारंटी right to constitutional remedies often referred by Dr. B. Ambedkar as a heart and soul of the constitution जो rights to remedies अछि सेटा को आर्टिकल रे अछि जो जहा को हम कहि थाउ heart and soul of the constitution एटा बहुत इजी क्वेश्चन आर्टिकल 3.2 32 रे जाउछि आपनकर constitutional remedies मनेला आर्टिकल 32 रे जाउछि constitutional remedy जोटा कि heart and soul of the constitution बोली हमें कहि थाउ एवं रीड्स पावर मध्य अछि आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट रो अछि 32 हाई कोर्ट रो अछि 226 तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिबो प्रिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी पचाला एबे रिसेंटली पिला माने को स्टेट करिछि यूसीसी लागू करिछि आपनकर एठी आसाम लागू कला आसाम पूर्वरु उत्तराखंड लागू करथिला एबे आसाम करिछि ता को आर्टिकल पिला मन जीवो मंडब आर्टिकल 44 जाउछि एटा ए यूनिक नियम इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट ग्रेड उडे सिविल मैटर ऊपर मैरिज को नहीं पारे सक्सेशन को नहीं अडॉप्शन को नहीं स्टेट रो गोटिए नियम रहइबो सब जाति धर्म सब लोक मानव पई अकोंती यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली सिविल मैटर नै कि मैरिज सक्सेशन अडॉप्शंस डाइवोर्स ए सब सेम नियम रहइबो ला आर्टिकल 44 मेंशन अछि not enforceable by the court कोनोसी स्टेट निज इच्छा अनुसार को करि परिबे सेमति एनफोर्स नाही जे सब स्टेट करिया को बाध्य बुझिला तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज custodian and guardian of the fundamental rights of Indian citizens लोकमान को राइट्स को किए प्रोटेक्शन देई थे किए गार्डियंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर पिला माने आमे जदी कोनोसी की वायोलेशन करूची हमर राइट्स की आमे कोडी जाउ सुप्रीम कोर्ट द्वारस्थ होचे ता माने सुप्रीम कोर्ट को कहजिबो गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ए क्वेश्चन में आस्तला गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मन रखिबो आर्टिकल 3.2 स्पेसिफिक इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट करि परिबो द फंडामेंटल ड्यूटी रीड्स पावर मध्य अछि किछटा पांचटी पावर अछि एस रीड्स पावर माध्यम रे प्रोटेक्शन मध्य देई थे जुडिशियल रिव्यू मध्य अछि आर्टिकल 13 मेंशन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोर प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर डीपीएसपी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्ट आर्टिकल 39B एंड 39C
आगुरु बहुत समय कॉन्फ्लिक्ट चले जे डीपीएसपी इज मोर पावरफुल और फंडामेंटल राइट्स इज मोर पावरफुल बुझिला किंतु एमिति कोनोसी जजमेंट आसिला जोटे कि आम रिस्टोर करागला फंडामेंटल राइट्स ओवर डीपीएसपी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यदि कॉन्फ्लिक्ट आसीबो तले आपण बेसिक फंडामेंटल मौलिक अधिकार को बेसिक फोकस करिवे ओवर डीपीएसपी स्टेट रो ड्यूटीज एबो को अमेंडमेंट एक्ट रे एटा हैला एक्सेप्ट 39 थी सी एबो 39 बी जा अछि ताकू छाडी कि तेटा को अमेंडमेंट रे चेंज हला मन रखियो से को केस रे मिर्नोमा मिल केस जजमेंट 1980 रे एटा कुहागला सुप्रीम कोर्ट कहिला एठी मन रखियो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 442nd अमेंडमेंट एक्ट कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड balance between आम जानी balance रहा दरकार फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जदि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जदि हैला ताले giving legislation giving effect to 39b 39c remain protected from the challenge बाकी अंडर आर्टिकल 14 एबो 19 जा अछि ताको छाडी बाकी मोर फोकस करा जिवो फंडामेंटल राइट्स ओवर डीपीएसपी किंतु हार्मोनी रहा दरकार balance रहा दरकार डीपीएसपी एबो फंडामेंटल rights super both are the basic part of the constitution. The Comptroller Auditor General of India is appointed under which article? को आर्टिकल अनुसार आमे सीएजी को अपॉइंटमेंट करि थाउ बा सीएजी को विषय रे को आर्टिकल मेंशन अछि 148 153 283 315 सीएजी को मेंशन अछि आर्टिकल 148 अटॉर्नी जनरल जे आसीबो 76 148 फॉर सीएजी सीएजी कोन पिला माने ये गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स रो गार्डियन हिसाब पत्र सब गवर्नमेंट रो ये रखंती गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्सेस सीएजी ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ईच स्टेट एंड ईच यूनियन टेरिटरी सेंटर स्टेट यूटी मध्य फंड हुए गार्डियन करंती रिमूव ऑफिस इन द लाइक मैनर लाइक ग्राउंड आज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जेमती हमको कोडा जाय से माध्यम रे हमको कोडा जीवो नॉर्मल वे रे कोडा जीवो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन events of resignation removal death both president and vice president who perform function of the president को death हे गेला कि vice president को हला कि ताको रिमूवल करा जायछि बा देह खराब अछि यदि से दुई जन एब्सेंट अछंती ताहले पिला माने किए एठी तांको दायित्व नेबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मन रखियो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट थिबे तांको दायित्व किए नेबे मन रखियो प्रेसिडेंटशिप किए करिवे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज एब्सेंट एटी क्वेश्चन लिखाई थी चीफ जस्टिस एम पिला माने एटी हिदायतुल्लाह परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट जुलाई 1969 when president जाकिर हुसैन डायड एंड वाइस प्रेसिडेंट बीबी गिरी रिजाइन ये कला परे आंको काम किए करथिले मन रखिबो चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो व्हिच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 टू डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ एटी एंटी डिफेक्शन लॉ को शेड्यूल मेंशन अछि 9th 10th 11th 12th को शेड्यूल रे पिला माने एंटी डिफेक्शन मेंशन अछि दि कोनसी एमएलए एमपी दल चेंज करसंती आफ्टर द इलेक्शन तांको डिस्क्वालिफाई करा जिवो मेंशन अछि 10th शेड्यूल रे मन रखिबो स्पीकर और चेयरमैन जे थिबे मन रखिबो ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस तांको पाखरे ही पावर अछि से डिस्क्वालिफाई करिवे इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 रेटा पछरे ऐड करा जायछि तम संविधान रे हाउ मेनी टाइम्स करेंटली प्रेजेंट द यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल अच्छा 7th शेड्यूल रे बतन यूनियन लिस्ट रे केतोटा अछि 97 थिला वर्तमान आपनकर 100 अछि टोटल केतरा सब्जेक्ट अछि कोच यूनियन लिस्ट रे बतन 100 टी सब्जेक्ट अछि आगुर थिला 97 बतन 100 अछि मन रखि
ओरिजिनल यूनियन लिस्ट 97 आइटम थिला अमेंडमेंट हेबा पर बर्तन 100 राशि पहुंचला जेमति कि डिफेंस फॉरेन अफेयर्स ऑटोमेटिक एनर्जी रेलवेज बैंकिंग ये सब बर्तन अच्छी आपनकर यूनियन लिस्ट रे नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिजाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट को देखो दीटा कॉन्सेप्ट मन रखियो पिला माने जॉइंट सिटिंग डकांती प्रेसिडेंट डकैला पर जो मीटिंग हुए तार प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहंती के स्पीकर ऑफ लोकसभा मन रखियो भलो से कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट प्रिजाइडिंग बाय लोकसभा स्पीकर एटा भलो से मन रखियो बहुत पिला कंफ्यूज मध्ये हो जानती इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे जॉइंट सिटिंग होबो नाही मनी बिल केस रे जॉइंट सिटिंग होबो नाही केवल ऑर्डिनरी बिल अन्य बिल वगैरह जा अछि ता ऊपर जदि कोनसी हाउस ए बिल नै कि कॉन्फ्लिक्ट हैला ता ऊपर जॉइंट सिटिंग हेता बोथ हाउसेस ऑल मेंबर आसी बसी थांती डिसीजन निया जाई सॉल्व हेता प्रॉब्लम मन रखियोटा भलो से द स्पीकर ऑफ लोकसभा preside over joint sitting or deputy speaker if speaker is absent Rajya Sabha limitation the chairman of Rajya Sabha that is vice president never preside over the joint sitting they are not member of either house kahi ki na vice president are not member speaker member thanti member speaker hoi thanti seti pai Rajya Sabha chairman kebe bi meeting karibe nahi keval lok sabha speaker in case of absent then deputy speaker karibe Which article of Indian Constitution provides for the appointment of Finance Commission every 5 years? प्रत्येक 5 वर्ष को थरे प्रेसिडेंट कौन करती ना Finance Commission appointment करती to review the financial position relation between state and center under article 280 जाउची कौन जाउची मन रहिला 280 आर्टिकल अनुसार जाउची Finance Commission विषय आपन को प्रत्येक क्वेश्चन ना किसी एक्सप्लेनेशन मिलुची एवं से एक्सप्लेनेशन आपन को एक्स्ट्रा मध्य क्वेश्चन आपन क्रिएट करि पारिबे क्वेश्चन पड़िबो जे फाइनेंस कमिशन गोटे को प्रकार बॉडी ना क्वेसी जुडिशियल बॉडी हला मैंडेट दैट प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमिशन एवरी 5th ईयर और सच ईयरलियर भी करि पारिबे जे दरकार पड़िला रोल कोन ना टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूशन करिबे नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following fundamental rights cannot be suspended even during national emergency declared under Article 352? पिला हमें जानी छे all of your rights will be suspended when the national emergency declared in the country, except Article 21, 20. ये दीट आर्टिकल जो राइट्स अच्छी ता सस्पेंड केबे हुए नहीं बाकी सब राइट्स हमर ऑटोमेटिकली सस्पेंड तो आर्टिकल 20 एंड 21 ऑप्शन है आपनकर कोन सी ऑप्शन मनैला ऑप्शन है जो सी ऑप्शन ये केबे सस्पेंड होबो नै राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी बाकी रहला आपनकर प्रोटेक्शंस इन केस ऑफ कन्वेंशनल ऑफेंस हला ए दीट आर्टिकल जो रहला गोटे होची राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्वेंशनल ऑफेंस जो आर्टिकल 20 जाउची ये दीटा केबे सस्पेंड हुए नहीं इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी आल्सो बाकी सब आर्टिकल सस्पेंड होई जी नेक्स्ट क्वेश्चन मत पिला माने अच्छी ठीक हमरो बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेयर द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एट पार्ट आईएक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आईएक्स में नुआ करा गला जे पंचायत राज एबो को अमेंडमेंट एक्ट रे पंचायत राज करा गला मन रखिबो हम जो बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंडेशन रे 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आसिला 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे दुईटा करा गला 74 फॉर म्युनिसिपैलिटीज 73rd फॉर पंचायत राज इन रूरल एरिया एवं 74 होची अर्बन एरिया 3 टायर स्ट्रक्चर मध्य करा गला विलेज लेवल पाई करा गला ठी ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पाई पंचायत समिति सॉरी हमरो ब्लॉक लेवल पाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पाई जिला परिषद 3 टायर स्ट्रक्चर 73rd अमेंडमेंट एक्ट करा गला मिनिमम 30% रिजर्वेशन रहिला वुमेन मानो पाई एबो एसिस्ट मानो पाई मध्य रहिला रिजर्वेशन
इट मेड रेगुलर 5 इलेक्शन प्रति 5 वर्ष रे मध्ये इलेक्शन हबो ये सब दिन करा गला 73rd अमेंडमेंट एक्ट अबाउट 29 टा सब्जेक्ट दिया गला काहा को पंचायत को which following bodies is responsible for conducting the election municipalities पंचायत एबे जो आपन कहली म्युनिसिपालिटी बा पंचायत करा गला आप भी इलेक्शन प्रति 5 वर्ष थरा हबो की करि थाए मन रखिबो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करे नाही मन रखिबो ये आकु करि थाए मन रखियो स्टेट इलेक्शन कमिशन की कर थाए आप स्टेट इलेक्शन कमिशन स्वतंत्र अछि एटा आकु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करे नाही नेक्स्ट क्वेश्चन पचला under which article can Supreme Court of India review any judgment pronounced or order made by itself यदि मु आज सुप्रीम कोर्ट मु कोन जजमेंट देछि बा प्रोनाउंस करिछि ताकू अगेन मु रिव्यू करि पारि मो जजमेंट को मु रिव्यू करि पारिबी को आर्टिकल माध्यम रो अछि आर्टिकल मन रखिबो 137 सपोज मु सुप्रीम कोर्ट मु जजमेंट दे देछि ऑलरेडी ताकू मु मध्ये पछ रिव्यू करिकि चेंज करि पारिबी आर्टिकल 137 रे मेंशन अछि सेल्फ करेक्शन पावर आर्टिकल 137 specities gives supreme court to power to review its own judgment given by passed by it to remedy any clear error or injustice ताको लागिला जदी कोनसी मु जजमेंट देछि किछि भूल होला बा भूल हेछि बा किछि एरर हेछि छि निज जजमेंट को चेंज करि पारिबो a review petition is entertained only in a narrow ground such as discovery of crucial new evidence or manifest error of law in the face of record next question pilaman jiba which part of the constitution deal with emergency provisions को पार्ट रे आपनकर emergency provisions mention अछि article xv 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 triple I x मन रखिबो 18 पार्ट रे जाउ 18 पार्ट रे इमरजेंसी लिखाइ छि एबो 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी अछि आपन कहि परिबे गोटे आपनकर गलाबरी आपनकर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 ये 3 इमरजेंसी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कार पार्लियामेंट मन इच्छा करि परिबे नाही The idea of DPSP in the Indian Constitution was inspired by Constitution of which nation? आम जो DPSP concept आमे कोठ बर करि आइलु आमे पिला मान तो इरिस रु बर करि आनिसु इरिस आनथला कोठी स्पेनिश रु आनथला मन रखिबो एठी इरिस रु आमे बर करि आइलु बा आइलैंड रु बर करि आनिचु ए जो DPSP रो concept जोटा कि जाउची बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टेट आर्टिकल आपन को जाउची 36 रु 51 भीतर कवर करूची डीपीएसपी आमाइलो इरिस रु इरिस आनतला स्पेनिश रु मन रखिबो एटा भलो से व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पेशल प्रोविजंस टू द स्टेट ऑफ नागालैंड नागालैंड स्टेट पाई स्पेशल प्रोविजंस कोन अछि मन रखियो आर्टिकल 371 ए कोन कहली 371 ए स्पेशल प्रोविजंस टू द स्टेट ऑफ नागालैंड नागालैंड पाई गोटे स्पेशल प्रोविजंस रही मनला 371 ए by the 13th Constitutional Amendment Act 1962 protecting Naga religious, social and customary practice. Legislative restriction देखो Act of Parliament regarding Naga customary law, land ownership and transport do not apply to Nagaland unless Legislative Assembly of Nagaland so decide by the regulation. जब मतलब Assembly न चाहिए सेंट्रल कोनोसी एक्शन नहीं परिबो नहीं. Next question, official language recognized by the Constitution of India are listed in which schedule? टिके पूर्व डिस्कशन समय भी आपन कहितली को शेड्यूल रे ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन अछि ना 8 शेड्यूल पिला आगो थिला 14 लैंग्वेज मन रखियो 14 प्लस 8 ए जो 8 टाइम टू टाइम पछे आड हैला मिसिकरी टोटल 22 लैंग्वेज को दिए जाइछि आपनकर शेड्यूल स्टेटस ऑफिशियली
ये जो विभिन्न मन पचर आड होती 71st 21st एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट बोरो डोंगरी मैथली सांताली ये सब पचर जिनस हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने प्रेसिडेंट को किए शपथ पाठ करे किए करे मन रख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ पाठ ने जब ये एब्सेंट थे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे इन केस ऑफ एब्सेंट Which constitutional amendment act popularly known as mini constitution टिके पूर्व आपन कहली ड्यू टू इट्स स्वीपिंग चेंजेस बहुत किछि चेंजेस एई अमेंडमेंट द्वारा हिछि सेते पे आपको मिनी संविधान बोली कहि थाउ कोडा पिला माने 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत गुडे चेंजेस होइछि संविधान रो एई अमेंडमेंट एक्ट पास होबा पोरे सेते पे आपको मिनी संविधान बोली कहि थाउ देखो एठी मेन कम आप कहि परिबे प्रिएम्बुल को चेंजेस करा गला फंडामेंटल राइट्स के चेंज करा जायछि डीपीएसपी करा जायछि जुडिशियल पावर हला तापरे पार्ट आईवीएफ फंडामेंटल ड्यूटी मध्ये ऐड करा जायछि बहुत किछि चेंजेस हेछि आपन को 42nd अमेंडमेंट एक्ट सेति पे आपको हम कहिया कोन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहि थाउ अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन on what ground can president rule be imposed in state को ग्राउंड रु स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होई थे जेतेबेले गवर्नर satisfied that the constitutional machinery not function according to the constitution provisions then he informed the president sir please declare the president rule in the state nahi to president be if president satisfied that the machinery not function properly then से भी अप्लाई करि पाइबे बिना गवर्नर परमिशन भी दीटा केस ही पारे तमन हम कहि परिबा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट अप्लाई ही परिबा आपनकर प्रेसिडेंट रूल गोटे मिनिट खाली पिला माने बुझिला जो आपन कहली चलो नेक्स्ट जीवा पिला माने व्हिच कमिटी रेकमेंडेड द थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम मैं आपन डिस्कशन समय भी ऑलरेडी कहि देछि जो को कमिटी आपनकर पंचायत राज सिस्टम को एठी लागू करिछि बा को कमिटी रेकमेंडेशन देइथिला पंचायत राज सिस्टम बुझिला से कमिटी ना कोन मन रखिबो बलवंतराय मेहता कमिटी ए टिके पूर्व डिस्कशन समय आपन को कहिथिले एटा नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामन जीवा व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट रे विभिन्न सेशन होई थाए मिनिमम दुटा सेक्शन होबा जरूरी एवं मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन इज 6 मंथ मन रहिला मिनिमम टू सेशन होबा निहत जरूरी एवं मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेक्शन इज पिला माने टू सेशन इज आपनकर 6 मंथ एटा भल लक्ष्य मिनिमम केते सेक्शन होबा दरकार मैक्सिमम गैप केते नेक्स्ट क्वेश्चन
Which article of Indian Constitution prohibit discrimination against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth? Article 14, Article 15, Article 16. কোটি লেখা আছে which article of Indian Constitution prohibit discrimination against any citizens on ground only religions? तो ताମାନେ डिस्क्रिमिनेशन कॉन्सेप्ट पचाइसे डिस्क्रिमिनेशन आपन भेजु आर्टिकल 15 जदि आपनकर कोनोसी पर्सन आपन रिलीजन को नेकरी कास्ट को नेकरी आपन रेस को नेकरी प्लेस ऑफ बात को नेकरी आपन को पब्लिक प्लेस रे डिस्क्रिमिनेट करूची अनदेखा करूची घुणा करूची आपन ता अगेंस्ट एक्शन नहीं पारिबे डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिट इन पब्लिक प्लेसेस नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन आसीबो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड 9th शेड्यूल जोरा अपन जाउची लैंड रिफॉर्म्स जाउची प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 7th अमेंडमेंट एक्ट 24th अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट को अमेंडमेंट रे जाउची आपनकर लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्शन मिल पारिबो एवं फर्स्ट मन रखियो को अमेंडमेंट एक्ट जाउची पिला मन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 रे हमरो 9th शेड्यूल आ रहला एवं लैंड रिफॉर्म्स मध्ये रहिला एवं लैंड रिफॉर्म्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एटा भी आपन मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने इनिशियली लॉ प्लेस इनसाइड द 9th शेड्यूल और ओरिजिनली ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल इनवैलिडेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किंतु गोटे केस आसिला लैंडमार्क आईआर कोलियो केस 2007 सुप्रीम कोर्ट कहला जे लॉ जो अच्छी 9th शेड्यूल रे मन रखिबो अप्रैल आफ्टर अप्रैल 1924 1973 आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायोलेट बेसिक स्ट्रक्चर जदि भी कोनोसी लॉ अच्छी लॉ तैयार कर जायछि 9th शेड्यूल रे जदि सीए भी फंडामेंटल राइट्स की वायोलेट करूछि सीए मध्य जुडिशियल रिव्यू अंडर जीवो आगुरु इम्यूनिटी थिला एबे ता अंडर मध्य जाउछि नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जेबे चाहिबे तांको इच्छा अनुसार ये तांको ऑफिस से रहिबे किए पिला माने बेसिकली गवर्नर काना अपॉइंटमेंट सो होई थांती गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा किंतु आंकु नॉर्मल वे रे कढा जाई परिबो नाही अलगा सबंकु आंकु किंतु नॉर्मल प्रेसिडेंट काढी परिबे एनी टाइम गवर्नर ऑफ स्टेट मन रखिबो कोन स्टेट रो गवर्नर 5 वर्ष जदियो गवर्नर यूजुअली होल्ड ऑफिस फॉर ए 5-year टर्म they have no security tenure and can be removed by the president any time without formal enquiry हला बाकी जो सब पोस्ट अच्छी इलेक्शन कमिश्नर सीएजी एजी ये सब इजीली रिमूव होई परिबे नाही आंको पाई रिजोल्यूशन पास हो बोथ हाउसेस से पर दिन से सब अच्छी which article of Indian Constitution provides for the establishment of Union Public Service Commission UPSC and State Public Service Commission को आर्टिकल जाउची यूपीएससी फॉर सेंटर पाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर स्टेट पाई 280 तो फाइनेंस कमिशन गला बारी एठी आपण मन रखिबो 315 जाउची 315 जाउची आपण 324 इलेक्शन कमिशन 315 आपण को जाउची मन रखिबो 315 पार्ट एक्स आईवी जाउची क्रिएट Union Public Service Commission for State and State Public Commission for each state. The member appointed by the President for UPSC or Governor for State PCS and enjoy tenure securities Article 317 to ensure unbiased recruitment. एटा भी मन रखियो आपण की अपॉइंटमेंट दियंती नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाम जियो व्हाट इज मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गोटे लोक इलेक्शन रे ठिया पई मिनिमम केते दरकार एज प्रिस्क्राइब करा जायछि पिला माने प्रेसिडेंटल इलेक्शन पई आपण गोटे क्वेश्चन आस्तला पीईओ एग्जाम रे जे काउंसिल ऑफ स्टेट पई केते दरकार असेंबली पई केते प्रेसिडेंटल इलेक्शन पई केते एटा मन रखियो एज वा मन रखियो सब भलस
35 year age minimum 35 year age दरकार है candidate must also qualified for election of Lok Sabha member election पाई qualify हवा दरकार first condition second must not hold any office of the profit under central state government the years of minimum age for Lok Sabha and legislative assemblies 30 वर्ष for Rajya Sabha and legislative council है 25 वर्ष रहा आपनकर असेंबली पाई 30 वर्ष पहला काउंसिल पाई इलेक्शन which fundamental rights under part III constitution abolish untouchability की abolish कला जदि कौन सी लोग को पब्लिक प्लेस रे प्रैक्टिस करूची that is punishable offense एटा को आर्टिकल जाउची आर्टिकल 17 जाउची abolition of untouchabilities नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा पूर्वरु पिला माने आउ थरे आपन कहि दउची जो माने स्पेशली गोटे पिला को सर मु एसआई पई प्रिपरेशन करूची मो पई किछि बैच अछि कि नाही तो आपन कहि दउची एसआई पई आपन सीधा सर्च करी ऊपर सर्च बटन रे एप्लीकेशन इंस्टॉल कला परे पुलिस एसआई बा एठी आसिला प्रतिरक्षा बा ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम ऊपर क्लिक करिवे बैच ना होची प्रतिरक्षा एटा पिला माने स्पेशली ओडिशा पुलिस एग्जाम पई जो सिलेबस अछि ताकू बेस के रहिची प्राइस बहुत कम अछि 15-17 एगिन अपन डिस्काउंट पाई परिबे बाय नाउ ऊपर क्लिक करिवे मनैला बाय नाउ ऊपर क्लिक करले अपन गोटे कोड मागिबो एंटर कूपन कोड एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाए पई सेठी अपन कोड मनैला RRLIVE ए कूपन कोड अपन यूज करिवे RRLIVE आपको आपण अप्लाई कला पर देखंतु आपण डिस्काउंट कटिकरी मात्र आसीबारी 1348 हला ओडिशा पुलिस एसआई रो जो एग्जाम आगु हबो टोटल सिलेबस एथरे कंप्लीट हो जाउची बुझिला कोड मन रहिला ए जो कोड मेंशन अछि RRLIV ए कोड आपण यूज करी जॉइन करिवे एएसओ पाई करंतु पीईओ पाई मध्ये बैच रहिछि आपण सीधा ऊपर देखंतु पीईओ सर्च करिवि पीईओ खाली लिखि देबी आपण गोटे पीईओ आसिला सामर्थ्य बैच एटा आरआई अमीनो पाई हबो एवं पीओ पाई मध्ये रहिछि एवं टोटल जते प्राइस अछि एटा मध्ये आपनको आउरी डिस्काउंट हे जिवो सेम प्रोसेस बाय नाउ ऊपर क्लिक करिवे कूपन कोड मागिबो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाए पाई एवं कूपन कोड रे आपण यूज करि परिबे कोन ना RRLIVE यूज करी अप्लाई कला परे डिस्काउंट आपनको आसे रखंतु एठी मु कूपन कोड यूज कली RRLIVE आपको देखो अप्लाई माइली डिस्काउंट कर 1348 एटा मध्ये अछि बैच नाम सामर्थ्य केवल पीईओ सर्च करिवे सामर्थ्य बैच आपन को आसीबो बुझिला एमटी एसआई पाई पीओ पाई एएस पाई आपन बहुत गुडी बैच रहिछि एवं सिलेबस अनुसार क्लासेस रहउछि क्लासेस सहित आपन को टेस्ट सीरीज मध्ये ए बैच मान करे आड अछि आपन टेस्ट मध्ये एक्सेस करि पारिबे ठीक अछि ओके concept of procedure established by law article 21 of the Indian constitution was originally borrowed from which country procedure established by law जो procedure law establish होची ताकू ही अप्लाई करा जो होल कंट्री एबो सब लोक मानबे बेसिकली पार्लियामेंट द्वारा ही था आपको हमें मन रखो जापान रो बरो करी आनिछि कोटो आनिछे जापान रो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमर फॉलो करा जाउ नाही किंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो न करा गले मध्य जो प्रोसेस लॉ तैयार होची दैट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल हबा दरकार ला फ्री एंड फेयर हबा दरकार एवं जस्ट हबा दरकार जापानीज ओरिजिन में आनिछे देखो अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ए मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट सी कहूँ को आर्टिकल मेंशन अच्छी मनी बिल केवल लोकसभा उपस्थापन हम प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन रे आर्टिकल 110 जाउची मनी बिल 112 जाउची बजेट बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मन रखिबो तापर फाइनेंस बिल मध्ये अछि 110 जाउची आपनकर मनी बिल एबो 109 कहूची मनी बिल कैन ओनली ऑरिजिनेट इन लोकसभा
requires prior permission of the president. Rajya Sabha cannot reject or amend money bill, only hold maximum 14 days and offer non-binding recommendation जहाँ भी दबो advice ता लोकसभा ପାଇଁ binding नुह. Next question पिलामन जीवा. Which article of Indian Constitution provides for the establishment of interstate council to inquiry into advice upon dispute between state? यदि स्टेट मध्य कौन सी डिस्प्यूट क्रिएट होची आप इंटरस्टेट काउंसिल्स मन रख. इंटरस्टेट काउंसिल्स आप कौन होची ना तैयारी हेबो. सी कौन करिवो ना डिस्प्यूट को कौन करिवो सॉल्व करिवो. मनला सेठी डिस्प्यूट को सॉल्व करिवो को आर्टिकल 262 263 279 ए 213 व्हिच आर्टिकल ना आर्टिकल आमे कहि पारे मन रखिबो बी 263 जाउची मन रखिबो एटी बी. ओके थैंक यू. देखो एबो सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन दैट द काउंसिल वाज फॉर्मली सेट अप होइतला 1990 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन जो कमीशन बसतिला सेही कमीशन रिकमेंडेशन रे एटा तयारी. नेक्स्ट क्वेश्चन जाउची आपनकर हु अमंग फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए डॉक्टर बी आंबेडकर जोड़ा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहि थाउ. जो कमिटी काम रहिला कोन ड्राफ्ट पास करिबा टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने. Next question कौची under which article of constitution can high court issue writs? High court writs issue करि थाए for the enforcement of fundamental rights as well as any other purpose. High court ପାଇଁ 226 Supreme Court ପାଇଁ 32 हमें जानि छे 226 article अनुसार high court issue writs issue करते हैं हमरो high court. Next question basically रही including हाबिस कॉर्पस मानामस प्रोहिबिशन क्वारंटो सेतुरारी एवं आपण जानिया को पड़िबो जे हाई कोर्ट रो स्कोप इज ब्रोडर दैन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स और इट्स पावर. काहे कि ना एठी व्हाइल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट कैन इश्यू फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एनी अदर पर्पस. ता माने Writs issue power is more greater than High Court in comparison to Supreme Court. एटा भी भले से मन रखिए आपण. यदि क्वेश्चन पचार दिए आपण को मन रखिए. Which constitutional amendment act added part IXB to the Indian Constitution granting constitutional status to cooperative societies? हमर IXB रे अछि cooperative societies एबो एटा को amendment act रे आड हैला मन रखिबो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे हला कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपण कहि परिबे जेडा कि हमर पछे रे आरहिछि पार्ट आईएक्स ए रे गला म्युनिसिपालिटीज वो पार्ट आईएक्स बी रे गला आपनकर एटा हमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एबो 43 बी रे मेंशन अछि डीपीएसपी प्रिंसिपल माध्यम रे कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपनको 43 बी रे मेंशन अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑन टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर यूनियन काउंसिल मिनिस्टर. केतेटा मिनिस्टर रहिबे सेंटर रे मैक्सिमम लिमिट केते एटा मन रखियो. गोटे अमेंडमेंट एक्ट मध्य पास हेइथिला गोटे अमेंडमेंट एक्ट मध्य पास हेइथिला जोडा कि सी कहूछि maximum strength of Lok Sabha in case of state assembly, in case of central Lok Sabha 15% total strength of Lok Sabha. Lok Sabha जेति की मेंबर तार 15% maximum ministership हेई पारिबे जरा कि 91st अमेंडमेंट एक्ट पिला माने 2003 रे एटा चेंजेस करा गला. असेंबली मध्य से स्टेट केस रे
Which article of Indian Constitution provides establishment of Goods and Service Tax Council? GST Council को article 269A, 279A, 280, 300A मन रखियो 279A रे जाउची GST Council ला जीएसटी काउंसिल्स आपनको जो 2017 जुलाई 1 रे लागू होला जीएसटी 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 मन रखियो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 रे जीएसटी लॉ पास हैला एवं आर्टिकल 279 ए रे रखा गला जीएसटी काउंसिल चेयरमैन बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंक्लूड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर एज ए मेंबर हैला एटा भल से मन रखियो Next question pilamana asila which constitutional amendment act provided constitutional status to the National Commission for Backward Classes National Commission for Backward Classes को मिला status एटा कोड जिबारे 102 amendment act मन रखिबो 102 amendment act आपनकर 2018 give constitutional status to National Commission for Backward Classes NCBC मनला NCBC को देला एवं आर्टिकल 338 बी आड है द 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंसर्ट आर्टिकल 338 बी ग्रांटिंग फुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द एनसीबीसी ऑन पार विथ एनसीएससी एंड एनसीसी under which article of the constitution can governor reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of president गोटे बिल गोटे गवर्नर रिजर्व रखन जो बिल आस्था है असेंबली रो टू गवर्नर कैन रिजर्व ए बिल फॉर प्रेसिडेंटल रिकंसिडरेशन तरा को आर्टिकल जाउच आर्टिकल 163 1200 20 पिला माने गवर्नर को कांसेप्ट आपन को आसी मान मन रखियो आर्टिकल 200 कहूची गवर्नर कैन रिजर्व ए बिल फॉर प्रेसिडेंटल कंसिडरेशंस passed by the legislature. A governor constitutionally bound to reserve any bill that derogates from the power of High Court so as to endanger its constitutional position. Next question. 103 Constitutional Amendment Act 2019 introduced maximum of 10% reservation in education public employment for which category? को category पाई reservation 10% रहिबो पिला माने हम जानिछे 10% रिजर्वेशन 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 रे नुवा कला कहा मन पई ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस पई 10% रिजर्वेशंस फ्रॉम पिला माने जनरल पोस्ट रु पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी रखिया 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 रे ऐड करा गला Next question. Which constitutional amendment act known as Nari Shakti Bandhan Abhiyan reserving 30% seat for women in Lok Sabha and state legislative assembly. Recently এটা pass হয়েছে কো amendment act রে নারী শক্তি বন্ধন অভিযান বা 33% reservation in assembly election Lok Sabha election को amendment act मन रखिबो 106 amendment act 2023 106 amendment act 2023 रे कला 33% reservation of women in assembly or Lok Sabha election दिल्ली legislative assembly elections एवं नुआ आर्टिकल रहिला 330 ए 323 332 ए 334 टू ऑपरेशनलाइज पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर वोमेन एटा मन रख 330 332 334 ए व्हिच फंडामेंटल गोटे मिनट पिला मन हेलो हां 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 हेलो
So, which fundamental principle of center-state relation was examined in detail by the Rajmanar Committee, मन रखियो, set up by the Tamil Nadu government in 1960. Judicial autonomy, autonomy and federal relations, electoral reforms, local self-government. Which fundamental principle of center-state relation was examined in detail by Rajmanar Committee set up by Tamil Nadu government in 1969. Judicial autonomy, autonomy and federal relations, electoral reforms, local self-government. कोउटा आपनकर एठी राइट आंसर हबो. आंसर इज पिला माने ऑटोनॉमी एंड फेडरल रिलेशन. ऑप्शन इज जो बी राइट आंसर. ऑटोनॉमी एंड फेडरल रिलेशन. It advocated their greater state autonomy, deletion of Article 356, 366, transferring residual power to state. ये सब गोटे कमिशन बसला डॉक्टर पी.भी. राजमना सी कहले जे सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं गोटे कमिशन बसला सी कहले आर्टिकल 356 एवं 360 को हटा जाओ, डिलीट करा जाओ. स्टेट इमरजेंसी रहा दरकार नहीं एवं स्टेट को बेसी ऑटोनॉमी दिया जाओ. ये सब कॉन्सेप्ट कही कि राजमना कमिटी. Under Article 360, who among following can issue proclamation of emergency? Financial emergency. Financial emergency किए डिक्लेयर करी थांती. जे financial हो कि स्टेट हो कि जेकोनसी हो तीनटा इमरजेंसी मन रखिबो. प्रेसिडेंट ही करिवे ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट. बुझिला पिला मन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपन का आसीबो एठी. व्हिच फॉलोइंग ओरिजिनल रीड्स लिटरली मीन्स वी कमांड. का अर्थ होची वी कमांड. वी कमांड को रीड्स रो मेन मीनिंग होची बा मेन अर्थ होची वी कमांड. हाबिस्कपस मांडामस कुआरंटो स्थितुरारी. पिला माने वी कमांड मीन्स आमेठी ऑर्डर दोचु. मीनिंग आपन कहि पारे कार मांडामस. वी कमांड. Literal meaning of mandamus is a Latin term that translates directly to the we command. Propose an order issued by the superior court to lower court, tribunal, public authorities, directing them to perform public or statutory duties they have failed or refused to perform. Who among following was a first Chief Justice of Independent India? किए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, जस्टिस एस जे कानिया, जस्टिस मेहरचांद महाजन. ये सब पिला माने फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए मन रख. इंडिपेंडेंट आम जाने एच जे कानिया पिला माने हबो मन रख. एच जे कानिया वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. गोटे मिनट.
ଟିକେ ଭାଇନା କାମ ରହିଯାଉଛି କଣ କରିବା। ହଉ ଦେଖ, under article 249 of the constitution, who can empower parliament to make law on a subject on the state list in the national interest? ସେକୁ ଯଦି एक्चुअली नियम कौन जे पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट अच्छी पार्लियामेंट आमेंड करवा लॉ बन पार, स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट स्टेट बन पार, कनकरेंट उभय स्टेट और सेंटर मिसिक लॉ तैयारी करेंगे कनकरेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट अच्छी। किंतु एमती कौन सी टाइम आए जे यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट ऑल्सो। फर्स्ट कंडीशन केबे आसीबो? इन केस ऑफ इमरजेंसी अप्लाइड इन होल कंट्री। सेकेंड कहि परिबा बाय पासिंग रिजोल्यूशन इन राज्यसभा, हला बाय पासिंग रिजोल्यूशन इन राज्यसभा जदि हेई गला ताले कैन चेंजेस स्टेट लिस्ट, कैन मेक लॉ स्टेट लिस्ट ऑल्सो बाय यूनियन गवर्नमेंट। Resolution must be supported by the majorities of not less than 2/3 of the member present and voting. Resolution passed under Article 249 remain in force for up to 1 year at a time and can be renewed indefinitely for a 1 year extension. Chalo. Next question: which article of the Indian Constitution guarantee the right to freedom of speech and expression to all citizens of India? Right to speech and freedom of expressions आर्टिकल 19 रे पिला माने 6टी फ्रीडम हमको दिया जाइछि। तादरु कोटार जाउछि एक्सप्रेशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) सब आर्टिकल ए मन रखिबो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन जाउछि, आपन को फ्रीडम मिली छि, आपन सब कुछ करि पारिबे, बट सब्जेक्ट टू रीजनल रेस्ट्रिक्शन आल्सो दे आर। Supreme Court has interpreted the right to remain silent, right to information, and freedom of commercial speech. Next, which schedule of the Indian Constitution contain provision regarding administrations and control of scheduled area and scheduled tribe except Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram? MTM छाड़िकी बाकी जो scheduled area रहा 10 स्टेट रे तापे को शेड्यूल बा को शेड्यूल नियम अच्छी कहि परिबे? फिफ्थ शेड्यूल राइट हमर नियम अच्छी जे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट अदर देन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। It empowers the governor of state to direct that an act of parliament or state legislature shall not apply to scheduled area or shall apply with modifications. चलो, by which constitutional amendment act right to education insert करागला fundamental rights under article 21? आमे जानि छे under article 21 ए गोटे करागला right to education 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मान को free and compulsory education दिया जिवो। एटा को अमेंडमेंट एक्ट रे करागला मन रखियो, ए अमेंडमेंट एक्ट ना होची 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86 अमेंडमेंट एक्ट रे तीनोटी चेंज करागला मन रखियो। 21 ए गोटे ऐड करागला, आर्टिकल 45 के टिके मॉडिफाई करागला जोरा कि ईयरली चाइल्डहुड केयर हमें कहि परिबा, एवं 11th ड्यूटी मध्ये एटी ऐड करागला दैट इज कॉल्ड 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मान को आपनकर कोन करा जो ये तो 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मान को फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिया जिवो। ये 14 वर्ष पिला मान को आपनकर एजुकेशन दबा दायित्व होची पेरेंट मानकर। ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू सेंड द चिल्ड्रन टू द स्कूल, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने, रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पिला माने आर गोटे बढ़िया कॉन्सेप्ट मन रख, तीनोटी लिस्ट रे जो सब्जेक्ट अच्छी अलग लोक पाखे अलग पावर अच्छी,
किंतु जो पावर दीटा लिस्ट नहीं बा जो तीनोटी लिस्ट रे जो सब्जेक्ट नहीं जेमती साइबर लॉ वगैरह आपर किए रहिबा ए जो साइबर लॉ वगैरह कहा पाखे पावर रहिबो यूनियन पाखे माने स्टेट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट स्टेट ताकू अप्लाई करियो पावर को अप्लाई करियो यूनियन लिस्ट पाखे जो सब्जेक्ट ताको यूनियन देखिबो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट मिसिकरी कॉन्करेंट लिस्ट ऊपर जो सब्जेक्ट तापर लॉ बनेबे किंतु जो सब्जेक्ट तीनोटी लिस्ट रे नहीं ता कोनती रेसिडुअल लिस्ट एबो से रेसिडुअल लिस्ट बा सब्जेक्ट ऊपर पावर कहा पाखे अछि पार्लियामेंट ओनली मन रखी जेमति कि आपण कहि परिबे एबो ए जो this allocation residual power to the center rather than state was borrowed directly from the Canada government borrow करके जो मैटर ना स्टेट लिस्ट ना कंकर लिस्ट ना यूनियन लिस्ट अच्छी नहीं अलगा आउट ऑफ लिस्ट ताको हमें रेसिडुअल लिस्ट बोली कहबे which following constitutional provisions can be amended by simple majorities of parliament outside scope of article 368 जदि आर्टिकल 368 करा जिवो ताले दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटीज किंतु को चेंजेस केवल सिंपल मेजॉरिटी द्वारा ही थाए स्पेशल आवश्यक पड़े ना मन रखिबो अंक मधुरु ऑप्शन कोउट हबो जे केवल सिंपल मेजॉरिटीज ऑफ बोथ हाउसेस कैन चेंज करा जाय पारियो बा क्रिएट कर पारियो एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट पाई सिंपल मेजॉरिटी दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमिटी ऑफ द असेंबली ऑफ इंडिया यूनियन पावर कमिटी चेयरमैन किए सरदार वल्लभ भाई पटेल बी आर अम्बेडकर नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मन रखिबा जवाहरलाल नेहरू हिजो आपनकर यूनियन पावर कमिटी रो चेयरमैन तापर देखिबा राजेंद्र प्रसाद हेले स्टीयरिंग कमिटी रो चेयरमैन रूल प्रोसीजर कमिटी रो चेयरमैन सरदार पटेल हेले आपनकर एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर्स अलगला कमिटी देछि ना तापर आपन कहिबे ड्राफ्टिंग कमिटी हला बी आर अम्बेडकर अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज अपॉइंटेड एज ए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा को हमें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहि थाउ पिला माने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंको राइट्स अछि ही कैन ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इंडिया जते कोर्ट अछि सब जे ऑडियंस ही परिबे सुनी परिबे एडवाइस करि परिबे आपण आसिकरी पार्लियामेंट सेशन रे बसी परिबे किंतु डज नॉट हैव टू राइट टू वोट एडाई भले से मन रखिबो हला हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आको टेन्योर क्वालिफिकेशन देखो टू बी अपॉइंटेड पर्सन मस्ट हैव क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 88 कहूची अटॉर्नी जनरल हैज ए राइट टू स्पीक टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑन बोथ हाउसेस पार्लियामेंट और जॉइंट सिटिंग किंतु कैनॉट वोट दे पारिबे नाही व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जदि कोनसी स्टेट असेंबली फंक्शन हो नाही बा मीटिंग हो नाही आज सिमिलर आज प्रेसिडेंट गवर्नर कैन प्रोक्लेम ऑर्डिनेंस को आर्टिकल जाउची आर्टिकल 213 माध्यम रे जाउची मनला 213 जाउची गवर्नर कैन डिक्लेयर ए ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट असेंबली वाज नॉट सेशन ऑर्डिनेंस issued under article 213 ceases to operate 6 weeks after a reassembly of the state legislature unless approved earlier. Next question, which constitutional amendment act added article 15(5) to allow reservation of socially weaker section populations, reservation of socially weaker section populations, educationally backward classes in private educational institution also.
এটা भलसे मन रखिबो से कहू को अमेंडमेंट एक्ट ऐड कला आर्टिकल 15(5) allow reservation for socially educationally backward classes ACBC in private educational institutions आर्टिकल 93rd अमेंडमेंट एक्ट आम कहि परिबा 2005 रे करा गला एससीबीसी मानक पई रिजर्वेशन एससी एसटी OBC educational higher education private sector it extends state enabled reservations policy to private aided and unaided educational institutions across the India. Article 15(5) explicitly exclude करुछि minority educational institution refers to as Article 30A from the scope of these reservation. Minority मानक पई जोटा तिरछि सेठी नो केवल normal college मानक. How many member can be nominated by President India to Rajya Sabha? जो मानकर special knowledge अच्छी in case of art, literature, social service से मानको राज्य सभा को nominate करा जाए बिना election रे केतरी member करंती 12 member. लोकसभा 2 member थिला से बतन हटि जाइछि 104 amendment act रे केवल राज्य सभा अच्छी जे president can nominate 12 member to राज्य सभा without election. चलो Which article of Indian Constitution provides for a single, unified, and independent judiciary for entire nation? Single, independent, and unified judiciary for entire nation. Article 124 मन रखियो केते आर्टिकल 124. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने which non-constitutional body replaced Planning Commission of India January 2015 रे Planning Commission को replace करा गला किए नीति आयोग आपको हम कहि परिया गोटे non-constitutional and non-statutory body it is a think tank of government of India a vision document तैयारी करथे for development of country नीति आयोग. Next question, which article of Indian Constitution provides for the establishment of Election Commission? Election Commission of India establishment article केते टिके पूर्व आपन कहिथिली article 324 जाउची 315 जाउची UPSC 324 जाउची आपन को Election Commission of India for election of assembly elections आपन को presidential elections एवं लोकसभा elections. Chief Election Commission of India can only remove from office in the same manner and same ground as Judge of Supreme Court. आंकु ए अनुसार बाहर कर जे पारिबो बाकी नॉर्मल इलेक्शन कमिशन को बाहर कर जे पारिबो ऑन एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. प्रेसिडेंट इलेक्शंस ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट स्टेट असेंबली इलेक्शंस बाकी म्युनिसिपालिटीज जो रहिला आपनकर बा आपनकर रहिलाठी लोकल गवर्नमेंट पंचायत इलेक्शन ये सब स्टेट इलेक्शन कमिशन देखि था. जो पंचशील प्रिंसिपल अच्छी 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएक्जिस्टेंस वर ऑफिशियली साइन करगला 1954 बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री इंडिया एवं को कंट्री सहित ए पंचशील प्रिंसिपल पास करगला 1954 मन रखिबो एटा होची चाइना सहित मन रखियो आंसर हे जो आपनकर चाइना सहित करागला पंचशील प्रिंसिपल. एथरु आउरी आमे कोन क्वेश्चन पाया देखो पिला माने मन रख भलो से पंचशील एग्रीमेंट वाज फॉर्मली साइन करागला 1954 April 29 by Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Chinese Prime Minister Zhou Enlai. 5 mutual values, mutual respect for territorial integrities, non-aggressions, non-interference in the internal affairs, equalities, mutual benefit and peaceful coexistence. आपको कौन थी अपना कौन ना पंचशील प्रिंसिपल. Next question, which schedule of Indian Constitution outline division of power between union and state जोटा हमें कहूचे फेडरल स्ट्रक्चर बोली कहूचे जोटा कि 7th शेड्यूल ले जाउची आ ऊपर बहुत डिस्कशन है सालानी. State list, union list and concurrent list. Who among following has power to
प्रोरोग सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कहा पाखे पावर अच्छी पार्लियामेंट सेक्शन को स्थगित करि परिबा भांगी परिबा एवं विड्रॉ करि परिबा कहा पाखे पावर अच्छी हु वाज द पावर टू आम कहि परिबा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोरोग द पार्लियामेंट सेक्शंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखे पावर अच्छी एटा मन रखियो means terminate the sections either house of parliament rest exclusively with president of india adjournment भी करि परिबे while speaker of the chairman adjourn as house suspend sitting for 4 hours or delay only the president can enter parliament session को पिला माने टर्मिनेट करि परिबे किछि दिन पय सस्पेंड करि परिबे पावर अछि स्पीकर बा चेयरमैन ऑफ आइदर हाउस लेकिन किंतु टर्मिनेट करिया सेक्शन काम होची प्रेसिडेंट कर नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 280 recommendation made by the finance commission to president out of what nature आर्टिकल 280 रे पिला माने जो recommendation आसीची finance commission थारु टू प्रेसिडेंट को से recommendation नेचर केमितिया ओनली प्योरली मन रखिबो advisory nature not binding to the president only one type of advisory nature मन रखिबो next question under article which article of indian
नॉट बाइंडिंग जो ओपिनियन देबे से ओपिनियन टा पिला माने नॉट बाइंडिंग नेचर जो ओपिनियन देबे से ओपिनियन टा होची नॉट बाइंडिंग नेचर तामाने सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे पर प्रेसिडेंट को किंतु प्रेसिडेंट से ओपिनियन को मानिबे ता माने नहीं दैट इज नॉट बाइंडिंग नेचर फॉर द प्रेसिडेंट द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट एक मिनट पिला माने रू चलो चार्ज बसे देली इयरफोन टा चार्ज सरीला तो चलो नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन जीवा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ नेशनल कैपिटल एनसीटी ऑफ दिल्ली विथ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली पाखे पिला माने असेंबली लहिया जरूरी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्रिएट कला यूनियन टेरिटरी ऑफ नेशनल कैपिटल एनसीटी ऑफ दिल्ली विथ असेंबली मन रखियो 69th Amendment Act 1991 मनला 69th Amendment Act 1991 स्पेशल कोची आर्टिकल इंसर्ट कला 320 339 A 339 AB designing Union Territory Delhi as a national capital territory of Delhi NCT Delhi it provided Delhi with the assemblies and council minister headed by the chief minister Legislative Assembly of Delhi can make law on subject under the state and concurrent list except for the public order, police and land. आपको छाड़ी करी करी परिवर जहाँ कर चुकर. Next question पिलामन जिया which part of the constitution deal with administration of UT? UT की admin करा पाए को part रे mention होच. Part VI, part VII, part VIII, part IX. फिर आम जानी पार्ट VI हूँ स्टेट VII तो हटि जाइए बोली सी जाइए पार्ट VIII जाऊँगी यूटी प्रोविजन्स आर्टिकल 239 242 पार्ट VIII आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी presidential oversight every UT is administered directly by the president acting through an appointed administrator or lieutenant governor. Next question pilaman jiba who among following was interim president of the constituent assembly during first meeting on December 9 1946 first meeting December 9 1946 who among following was interim president of assemblies इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली पिला माने जेतले फर्स्ट मीटिंग हैला डॉक्टर सिन्हा करा गला आज ए ओल्ड एज हिसाब रे आज ए प्रेसिडेंट तापर 11th जो मीटिंग हैला फॉर्मेट करा गला राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिबा एबो दीटा बन रखियो दीटा वाइस प्रेसिडेंट रहिले एससी मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी एटा मन रखियो दीटा वाइस प्रेसिडेंट रहिले टू वाइस प्रेसिडेंट आल्सो देयर Next question पिला माने जिबा which article of Indian Constitution empower the parliament को पावर देछि to create new all India service common to both union and state union और state पाई create करिवो all India service को article देछि पावर to parliament मन रखियो article 312 article 312 create all India service both for central and state given by parliament power existing service currently 3 existing service अच्छी वर्तमान IAS Indian Police Service and Indian Forest Service एवं सेति पाई all India service can only create if Rajya Sabha passes
resolution supported by 2/3 majorities member president on voting. Rajya Sabha is more powerful in case of Lok Sabha, in case of Koti. All India service case re मन रखियो हला. Next question is which following reads literally translate to be certified or to be informed. का अर्थ होची to be certified or to be informed आपण कहि परिबे ता नाम होची statutory. Option is C कोन statutory. It is issued by higher court to lower court issue करा जाए or tribunal either transfer case pending जहाँ से transfer करो or quash or order due to excess jurisdiction or error of law. Next question आसिला पिला माने who administer oath of office of the governor of state in India. माने गवर्नर को किए शपथ पाठ करांती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ असेंबलीज. जेमति प्रेसिडेंट को करांती चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट रही जीवो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट. निज स्टेट रो हाई कोर्ट जे थेबे सीजे तांको द्वारा शपथ पाठ करांती का को गवर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन जीवा by which constitutional amendment act was a 10th schedule anti-defection law amend to remove the exception made by spilled. एटी पचारे पिला माने एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल रे को अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कर जाय छी आपन को सी कहै छी भाई व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंड टू रिमूव एक्सेप्शन मेड फॉर स्पिल्ड इन पॉलिटिकल पार्टीज. किंतु जदि पॉलिटिकल पार्टी की अलगा ही गले ताले ता पई लागू होबो नै बाकी इंडिविजुअल पई लागू होबो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003. Which article of Indian Constitution define state for the purpose of part triple state? Article 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. State definition कोडी अछि article 12 मेंशन अछि definition of state. हला fundamental rights रे मेंशन अछि definition of state. State कहा का को नै गठित ता मध्ये मेंशन अछि आपण कहि परिबे ठीक. State includes Government of India, Parliament of India, Government and legislature of state, local authorities and other statutory non-statutory bodies. What is minimum age required to a person become a member of the legislative councils? Council member पाई age केते टिके पूर्व आपण कहिथिली मन रखिबो 30 वर्ष. Council पाई 30 वर्ष age right answer. Which article Indian Constitution grant Supreme Court the power to grant special leaves to appeal against any judgment, decrees, order from any court? It is could have right answer. Which article कहि परियो पिला माने? Article 136 grant special leave to appeal against any judgment, decree or order from any court or tribunal in India. Special appeal आपण करि परियो 136. Next question, which constitutional amendment act पिला माने substituted the word cabinet into the Indian Constitution for the first time? Article under 356 cabinet. 42nd amendment act 1976. 44th amendment what? ये जो पचाची the word cabinet into Indian Constitution. Cabinet रो word कोराला को अमेंडमेंट एक्ट मन रखियो थी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 को छि कैबिनेट. Cabinet into article 352 sub article 3 of the constitution does not appear anywhere in the else original text. Prime Minister or Minister of Cabinet only. Under article 169 who was the authorities to create or abolish legislative council विधान परिषद गोटे स्टेट रो जो सेकंड हाउस abolish करिबा क्रिएट करिबा पावर कहा पत्र अछि? गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट.
कहा पाखे पावर अच्छी आबोलिश करि परिबा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मानिला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स दी थ्री सोवर्जिन लेजिस्लेटिव लिस्ट तबे सांसे पढ़िथिले 7th शेड्यूल मेंशन अछि तीनोटी लिस्ट विषय फेडरल स्ट्रक्चर आम कहि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने हु एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी हो बा नीति आयोग हो आर चेयरमैनशिप किए करंती प्राइम मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट मन रखियो एनडीसी नीति आयोग की प्लानिंग कमीशन बाय डिफॉल्ट चेयरमैन हेबे किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी हेबे से ही नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to assemble peacefully without arm in Indian citizens आमको जो 6टी फ्रीडम मिली तादर गोटे फ्रीडम अच्छी राइट टू असेंबल पीसफुली ता को आर्टिकल मेंशन अच्छी आर्टिकल 19(1) बी मतलब 19(1) बी who among following has the power to declare an area as an scheduled area under 5th schedule गोटे एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करिबा अंडर 5th शेड्यूल कहा पाखे पावर अच्छी गवर्नर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कहा पाखे पावर अच्छी गोटे एरिया को डिक्लेयर करिबा शेड्यूल एरिया मन रखिबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हला आंसर हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मन रख The declaration or alternation is done consultation with the governor of state concerned. जो स्टेट रो गवर्नर तांकर कंसर्न नेबे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल स्टेट विथ द 5th शेड्यूल एरिया आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल TAC up to 20 member 3/4 being STML advice and welfare measures. Next question पिला मन जिबा which constitutional amendment act made it mandatory for the president of India to give assent the constitutional amendment bill president पाखे power अछि से कोन करि परिबे president has the power to withdraw withhold bill reject bill ये सब veto power अछि किंतु constitutional amendment bill ऊपर veto power अप्लाई हेबो नाही बाध्य give assent the amendment bill 24 amendment act 1971 कहिला president must give assent to the constitutional amendment bill next question पिलावन जिबा which article of Indian constitution provides for appointment of ad hoc judges of supreme court in India ad hoc judges of supreme court of India article 126 127 128 130 मन रखिबो 127 of right answer 127 of right answer next jiba which article Indian constitution places a blanket bar on court from inquiring into proceeding of parliament which article constitution places a blanket bar on court क्लोंड ऊपर गोटे ब्लैंकेट बार पड़ जाइए सी पार्लियामेंटर जहाँ भी प्रोसीडिंग ताको एनक्वारी करि परिबो नाही को आर्टिकल मन रख आर्टिकल 112 मनला आर्टिकल 112 जीवो राइट आंसर state that validities of any proceeding parliament shall not be called into question on ground of any alleged irregularities or procedure. Next question. Under which constitutional amendment act Union Territory of Sikkim admitted a full-fledged 22nd state of Union India? को amendment act? को amendment act अनुसार सिक्किम को statehood status मिला 35th 36 38 14 मन रखियो 36 amendment act 1975 को मिला सिक्किम को 22nd स्टेट स्टेटस मिला ऑफ इंडिया
आगु 35 रे एसोसिएट स्टेट थिला आसाम रो तापरे ताकू फुल फ्लेज करा गला एबो 371 एथ आर्टिकल ऐड करा गला to provide special provisions protection for the governance of legislative assembly of Sikkim. Next question pilaman jiba. Which article of Indian Constitution outline constitutional procedure for impeachment president of India? प्रेसिडेंट को पदरु बहिष्कृत करिया पई को आर्टिकल जीवो आर्टिकल 61 आपण कहि परिबे आर्टिकल 61 कहि परिबे impeachment procedure of president. Next question, who among following has the power to extend or exclude the jurisdiction high court to from any union territories? कौची पिला माने कहा पाके पावर अच्छी टू एक्सटेंड और एक्सक्लूड करि परिबे एक्सटेंड करि परिबे गोटे हाई कोर्ट रो पावर को अन्य अन्य स्टेट और यूटी पाई कॉमन हाई कोर्ट ही परिबो बा एक्सक्लूड मध्य करि परिबे कहा पाके पावर पार्लियामेंट पार्लियामेंट अमेंडमेंट करिवो एवं गोटे हाई कोर्ट शुड बी कॉमन हाई कोर्ट टू और मोर स्टेट और यूटी और एक्सक्लूड मध्य करि परिबो पार्लियामेंट हैज ए पावर. जेमती कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबर आइलैंड एंड केरला हाई कोर्ट लक्षद्वीप ये सब कॉमन हाई कोर्ट हो पारि. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी टू द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन पई पुडुचेरी भी शामिल हो परिबो काहे कि ना पुडुचेरी पाखरे असेंबली अछि एबो को अमेंडमेंट एक्ट कहला 7th अमेंडमेंट एक्ट 1992 मनैला इलेक्टोरल कॉलेज जो अच्छी असेंबली इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर president is elected by an electoral college consisting of elected member of both houses and state assembly. This inclusion ensures that elected MLA from the union territories which legislator participate presidential elections starting from 192 onwards. जार assembly अच्छी जो यूटी सेमानकर असेंबली मेंबर माने भी शामिल हो पारिबे. अंडर आर्टिकल 323A of the Indian Constitution, who is authorized to establish administrative tribunal for resolving service disputes for public servant? कहा पाके पावर अच्छी जे ट्रिब्यूनल सेटअप करि पारिबो in case of issue of public servant, that is called CAT, Central Administrative Tribunal, ASAT, JAT. कहा पाके पावर अच्छी Parliament has given power. Parliament of India has given power to set up kari paribo tribunals under Article Tribunal Act 1985. Next question, which article of Indian Constitution provides for the establishment of Joint Public Service Commission for 2 or more state? 2 or more state by Joint Public Service Commission टिके प्रोग्राम पढ़िथिले आर्टिकल 315 UPSC State PCS and JSPS Joint State Public Service Commission. Chairman member of Joint Public Service Commission appointed by the President Monarchy of India, not governor, and hold office 6-year term until reaching the age of 62 years. Next question, who among following determining salary allowances and service condition of CAG? CAG को सैलरी केते होबो सर्विस कंडीशन कोन रहिबो इशू की डिसाइड करथे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की करथे दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 202 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, who has the authority to transfer high court judge from one high court to other? का पाकर authority अच्छी से गोटे हाई कोर्ट जज को ट्रांसफर करि परिबो from one high court to other. President of India तो कहि परिबा but after consultation with Chief Justice of India, एटा मन रखिबो. President of India after consultation with Chief Justice of India. Next question पिला माने अपन जीवो,
Which constitutional amendment act added 14th schedule to the Indian Constitution? 14th schedule total पिला माने आमे जानिचे हम पाखरे एठी 12 schedule अछि ठीक अछि 12 schedule अछि तो 14th schedule एठी कोड आसीबो मैक्सिमम तो 11th और 12th पंचायत municipalities एठी 14th schedule कोड आसिला तो none of these are right answer. None of these are right answer. Which article of constitution lie down procedure for passing annual financial statement budget? आपण कहितली बजेट पई टिके पूर्व कहितली बजेट पई आपनकर को आर्टिकल जाउची बजेट पई जाउची आर्टिकल सॉरी स्टेट बजेट कहला सेंटर नो स्टेट बजेट हे जिवो 202 annual financial statement of state not center state पई 202 है राइट आंसर annual finance statement 112 आपनकर जिवारी सेंटर पई एवं 202 जिवारी स्टेट लेवल पे नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाम जो हु अमंग फॉलोइंग हैज पावर टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर एक्सपायर ऑफ द 5-year टर्म 5 वर्ष टर्म पूर्व भी एक्सपायर करि परिबे हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर एक्सपायर ऑफ द नॉर्मल 5-year टर्म 5 वर्ष पूर्व मध्य एक्सपायर पूर्व मध्य डिसॉल्व करि परिबे लोकसभा को कहा पाखे अच्छी पावर मन रखियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो करि परिबे किंतु मन इच्छा नो ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर का जेपन तो बहुमत अच्छी कॉन्फिडेंस अच्छी सेपन तो रहिबो जब ये निजे बा निज पटु कहिबे आपण भांगतु ताले भांगिबो नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट इम्यूनिटीज टू प्रेसिडेंट and governor from criminal proceeding during the term से टर्म थिला समय ताको एगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चार्ज लागि परिबो नाही को आर्टिकल जाउची आर्टिकल 361 आर्टिकल 361 मन रखिबो 361 आर्टिकल जाउची जे पर्सनल इम्यूनिटीज आर्टिकल 361 प्रोवाइड that president or a governor not answerable to any court for exercising the performance of personal duties power no criminal proceeding whatever can be done continued against president or governor in any court during the term of office किंतु सिविल प्रोसीडिंग लागि परिबो क्रिमिनल एप्लीकेबल हबो नाही which article of Indian Constitution provides establishment of State Finance Commission to review the financial position of panchayat and municipality. Financial position of panchayat and municipality article को article जाउछ review which article of Indian Constitution provides for the establishment of State Finance Commission. State Finance Commission काम रहिबो पंचायत municipality रो financial position को review करिबो को article जाउछि article 243 सब आर्टिकल ए आई सब आर्टिकल आई जाउची एटा रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी स्टेट फाइनेंस कमिशन गठन बा जरूरी नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमिशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 जो लॉ कमिशन बसतिला इंडिपेंडेंट इंडिया रो तारो चेयरमैन किए फर्स्ट लॉ कमिशनर चेयरमैन मन रखिबो ता ना हिजबो एमसी शीतलाबाद एमसी शीतलाबाद was also first attorney general of India मध्य ये थी लॉर्ड मैकुले चेयर फर्स्ट लॉ कमिशन प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया 1980 1834 किंतु ये ले आफ्टर इंडिपेंडेंस एमसी शीतलभात अंडर आर्टिकल 352 विदिन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अप्रूव केते समय भितर पार्लियामेंट द्वारा नेशनल इमरजेंसी की अप्रूव करा जाए
पिला माने आगु थिला 2 मंथ एबे 1 मंथ हे जायछि मन रखियो 1 मंथ हे जायछि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 अनुसार 2 मंथ को कम करा जाय 1 मंथ करा गला 1 मंथ भितरे राज्यसभा लोकसभा निजर अप्रूव करिवे एवं रेजोल्यूशन को पास करिवे with special majorities. Which article of Indian Constitution empower the President to establish a common high court for 2 or more state? 2 or more state ପାଇଁ ଗୋଟେ common high court establish କରିବା. को article Constitution empower the Parliament. Parliament को power ଦେଇଛି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଥିଲେ article 231 ମନେଲା article 231 empower the Parliament empower the President to establish a common high court 2 or more state. Parliament President no to Parliament habo mistake कर देछि President empower the President Parliament empower the Parliament टिके पूर्व हम पढ़ी थले. Next question, who among following can remove a member of State Public Service Commission from office on the ground of misbehavior? Would State Public Service Commission member मान को किए remove करी पारिबे in case of misbehavior? State Public Service Commission President after an inquiry by the Supreme Court. President करिवे after an inquiry of the Supreme Court inquiry कला पर. Presidential under Article 317 member of State PCS can only remove by President of India even though they are appointed by Governor. Governor appointment देई थांती किंतु काढी थांते President of India in case of misbehavior mandate inquiry of the Supreme Court. Binding Supreme Court जहाँ भी दबा inquiry that is report is binding on the President. Which amendment of Indian Constitution replace the term internal emergency? এটা আমি করিଥିଲେ টিকে पूर्वरु डबलिंग क्वेश्चन हे जाइछि. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जीवा. Which article of Indian Constitution grant citizens protection against double jeopardy? माने being आपनकर double jeopardy means कोन protection मिलता है same offense पाई अपन double punishment पाइबे नहीं. को आर्टिकल मेंशन अछि आर्टिकल देइछ को आर्टिकल मेंशन अछि double jeopardy same offense पाई अपन दी थर punishment पाइबे नहीं मन रखिबो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 रे जाउछ. Next question, which article Constitution provides establishment of a finance commission by President of India? Establishment of a finance commission by President of India. Finance commission हम जानी छे आर्टिकल 280 जाउची. Finance commission 280 जाउची. President of India finance commission establish करन्ते. Next question, who among the chairman of advisory committee on fundamental rights, minorities, tribal excluded area in the constituent assemblies? टिके पूर्व आपको भी हमें पढ़ी जे आपनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाइथिला पावर से तैयारी करिवे ए जो कमिटी चेयरमैनशिप मन रखियो. कमिटी चेयरमैनशिप फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया इन द constituent assemblies सरदार पटेल को दिया पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कहिला which following writs is issued by higher court to stop a lower court or tribunal for exceeding its jurisdictions? पिला माने लोअर कोर्ट को बा ट्रिब्यूनल को हायर कोर्ट दे था ऑर्डर आपन को जेति की पावर अछि आपन ता अंडर ही काम करंतु कोनती प्रोहिबिशंस ए रिट्स कोनती प्रोहिबिशंस. Stop ongoing judicial quasi-judicial proceeding before final decision is rendered. Next question pilaman jiba under which article of Indian Constitution can a person directly move to Supreme Court for enforcement of fundamental rights? Supreme Court jiba article 32 Supreme Court remedies पे हमें कहि परिया 32 जिबा. पिला माने आपन को आउ थरे कहि दोछि जो माने स्पेशली OPSC
एएसओ पई लागुच पिला माने स्टडी आईक्यू ओपीएससी माध्यम रे गोटे बहुत बढ़िया कोर्स अछि हमर कोर्स नंबर 4 आमे पहुंचलानु आपण एप्लिकेशन इंस्टॉल करी लॉगिन करिवे स्टडी आईक्यू आईएस होला पर ऊपर सर्च बटन आसीबो सेठी आपण जस्ट खाली एएसओ सर्च करिवे कोन कहली एएसओ आपको सर्च करिवे अप्लाई करिवे देखिए बैच नंबर 4 आसीबो 4 आसीबो ए बैच 4 एठी आपण फाउंडेशन बैच 4 जॉइन करि पारिबे बैच जुलाई रे स्टार्ट हिची एवं जेतिकी प्राइस अछि आपण डिस्काउंट मध्ये आउरी पाई पारिबे सिंपल बाय नाउ पर क्लिक करिवे बाय नाउ पर क्लिक ला पर गोटे कूपन कोड आपण मागिबो एंटर योर कूपन कोड सेठी आपण कूपन कोड स्क्रीन ऊपर शो करूची आरआर लाइव ए आरआर लाइव कूपन कोड को आपण लेखि अप्लाई मारिबे अप्लाई माइला पर देखंतु डिस्काउंट कोटी हे जिवो 2499 मनइला 2499 प्राइस एवं एठी आपण टोटल रहिबो वैलिडिटी पिला मन 12 मास रहिबो टाइम वैलिड टाइम रहिबो एवं एठी आपण कहि दोछि 450 घंटा क्लास पाई परिबे लेक्चर नोट प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज मध्ये बैच राड अछि आको आपण एक्सेस करि परिबे मनइला बैच नाउ 4 विद्या ओपीएससी एएसओ बैच 4 स्पेशली एएसओ पई तयारी हिच एथिरे मोर ओडिया ग्रामर क्लास रहउची एवं जीएस क्लास मध्ये रहउची नेक्स्ट आमे क्वेश्चन पिला माने जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा आमे एठी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये तो 9th तम करा है पिला माने डबलिंग क्वेश्चन हो जाई व्हाट इज मिनिमम एज प्रेस्क्राइब बिकमिंग गवर्नर ऑफ स्टेट गोटे स्टेट रो गवर्नर होवा पई मिनिमम एज केते दरकार स्टेट रो गवर्नर पई 25 30 35 40 गोटे स्टेट रो गवर्नर होवा पई केते एज दरकार पिला माने मन रखिबो से गवर्नर होंतु कि से प्रेसिडेंट होंतु मिनिमम 35 ईयर एज दरकार मिनिमम 35 ईयर एज दरकार नाइदर हाउस रो मेंबर से कौन से हाउस रो मेंबर भी हो नथिया दरकार व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस सिंगल इलेक्शन कमिशन विथ मल्टी मेंबर बॉडी आगुर गोटे पिला मन को सिंगल इलेक्शन कमिशन थिला ता गोटे मल्टी मेंबर बॉडी हे गला एक्ट ऑफ 8993 The conversion of election commission into multi-member body was executed by presidential notification. Election Commission Service Condition Act 1991 rather than constitutional amendment. कौन सी amendment होइनी गोटे presidential order एवं हमर act pass होइकि हला 1 cc 2 रहिबे commissioner. Which article of Indian Constitution provides establishment of National Commission for Scheduled Caste National Commission for Scheduled Caste को आर्टिकल मेंशन अछि मनक आर्टिकल हे जबो 338 338 आर्टिकल मन रखिबो 338 आर्टिकल ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST which was converted into a multi-member constitutional body by a 65th Amendment Act 1990 89 Amendment Act 2003 आकु अलगा कर देला NCST एवं NCSC मध्य होई गला नेक्स्ट क्वेश्चन who among following was the chairman of Union Constitution Committee Union Constitution Committee रो चेयरमैन किए आंक मधुरु किए थिले चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू मनैला जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पब्लिक पिला एटा टिके पूर्व मधे एटा भी करथिले सुप्रीम कोर्ट तो कंसल्ट करिवे आर्टिकल 143
by which amendment act was 8th schedule expand Sindhi language as the fifth official language. सिंधी को फिफ्थ लैंग्वेज करागला आगु 14 थिला पछरे 8 आड हेछि सिंधिया जे ऑफिशियल लैंग्वेज हला 21st अमेंडमेंट एक्ट सिंधी करागला तापरे बोडो डोंगरी मैथिली सांथाली ये 71st कराला फोर लैंग्वेज ये वन लैंग्वेज ये फोर लैंग्वेज तापरे पिला माने नेक्स्ट 92nd अमेंडमेंट एक्ट रे पिला माने एठी सरी कोंकणी मणिपुरी कोंकणी नेपाली अपन जो होला ये तीनटा करागला थ्री करागला अपन 71st रे थ्री करागला तापर 92nd रे बोडो डोंगरी मैथिली सांथाली फोर करागला वन रहिला 70 21st अमेंडमेंट एक्ट 71 रे थ्री लैंग्वेज ऐड करागला कोंकणी मणिपुरी नेपाली तापर 92nd रे फोर करागला बोडी बोडो डोंगरी सांथाली मैथिली एटा मन रखिबो तार ओडिया चेंज हला ओडिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिया अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन स्टेट असेंबलीज पास रेजोल्यूशन टू क्रिएट और अबॉलिश स्टेट काउंसिल गोटे स्टेट असेंबली मध्य रेजोल्यूशन पास करि परिबो असेंबली क्रिएट करिया पई सॉरी काउंसिल क्रिएट करिया पई वो काउंसिल को फास्ट असेंबली ही तमरो रेजोल्यूशन पास करिवो तापरे पार्लियामेंट परे आर्टिकल 169 कहूची स्टेट असेंबली फास्ट रेजोल्यूशन पास करिवो तापरे जीवो पठेबो का को सेंटर पाखु पठेबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस इज एम्बोर्ड इन आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 रे कोन मेंशन अछि आर्टिकल 50 रे अछि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 रे मेंशन अछि डीपीएसपी प्रिंसिपल जाउछि डीपीएसपी मन रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग फॉलोइंग डिटरमाइन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10th शेड्यूल मेंबर मान को डिस्क्वालिफाई करिबा कहा पकरे पावर अछि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रेस्पेक्टिव हाउस स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी एटा भी कराइथिला 148 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टीज रिमूव एटा भी कराइथिला पिला माने 44 अमेंडमेंट एक्ट रे व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फ्रॉम ओथ एंड अफर्मेशंस जो शपथ पाठ करिबा जो विभिन्न शपथ पाठ करती ओथ एंड अफर्मेशन एटा को शेड्यूल मेंशन अछि सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ वेरियस पर्सन आप कहि परिबे जे थर्ड शेड्यूल अछि मेंशन ओथ एंड अफर्मेशंस नैला who among following was president of constituent assembly फाइनली अडप्ट जेतले पिला माने अडप्ट हला नवेम्बर 26 रे अडप्ट हला 1949 सेतबले प्रेसिडेंट असेंबली प्रेसिडेंट किए थिले ना कोन डॉक्टर बी आर अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद थिले एवं आंकु फास्ट प्रेसिडेंट करा गला आफ्टर द जनवरी 26 जेतले संविधान कमेंसमेंट करा गला Which article Indian Constitution allow Parliament to pass law subject to state list? हाँ गवर्नर पाखे पावर अच्छी सी जेमती प्रेसिडेंट पाखे पावर अच्छी 72 आर्टिकल अनुसार सी कौन करें ना पार्डन दे पारे क्षमा दे पारे सेमती सेम कॉन्सेप्ट लागू हो पार गवर्नर को आर्टिकल रे पावर दि जाइए सी चाहिए कौन करें पार्डन दे पारे आर्टिकल 161
एति पिला माने इथिला क्वेश्चन ए क्वेश्चन भी होईची बाकी आपण पई सेमती आउ गोटे मध्य वन शॉट वीडियो आनिबी जोटा कि आपनकर अलगा सब्जेक्ट मध्य कवर रहिबो ठीक अछि थैंक यू।